Good morning everyone. I hope I'm live and clearly audible. Welcome to the session everyone. XAT 2023 QA practice session number 3. We had done two sessions before this, the previous month, practice session 1 and practice session 2. The purpose of these practice sessions is to like make you solve the previous year questions. Previous year questions to all of you will solve definitely whenever you are preparing for any exam. A lot of you would be preparing for IIFT and NMAT at this point. But if you are solving previous year questions for that, these sessions will definitely help. If not now, after maybe 1 or 2 weeks when you start preparing for the XAT exam, it will definitely help you people. So if you have missed the previous two sessions, the sessions are live on the CAT-alyst channel. Session number 1 and session number 2 you can check out, and if you're new to the channel, do like the session and subscribe to the CAT-alyst channel. Sorry for the background noise, we have a dog, so sometimes it's out of control, तो कुछ कर नहीं सकते. Anyways, let's begin. This is just a brief background of mine, and I was a student like you people not long back. Okay, so whatever things I say, I have gone through the same process, and when I'm advising or like saying something, because it's something I have gone through myself and things which has worked for me, I try and share the same things with you people so that you can benefit in the same way that I did. Just before we start 7-day free trial है, December 7th को खत्म हो गया ये, प्लस के लिए था 7-day free trial, and this is over now. So you could have maybe this offer would be extended आगे जाके. But important announcement, Unacademy CAT 2023 foundation test. Okay, तो क्या होगा, tests are on 11th and on 18th. तो 11th का जो test है उसके पहले 2 marathon होंगे 6 hours का. Okay, on 9th and on 10th. So it will help you prepare for the test, because जो लोग नए पढ़ रहे होगे और if you are 2023 aspirant, you don't know much about the syllabus and all, एक साथ exam देके you are not sure कि क्या होगा क्या नहीं होगा. So you can attend this 2 6 hours का marathon. So it will help you achieve better in the test, and you get good scholarships on your subscriptions and exciting rewards also. So do participate in this. YouTube में ही होगा, free for all, tests भी free for all. So definitely जो 2023 के लिए prepare हो रहे हो, take a look at this. Okay. So these are the 2 marathon. एक December 9th को होगा और एक December 10th को होगा. 3 PM से 9 PM is the date. So all top educators would be taking this. So do participate. You'll definitely learn a lot. And ये CAT का goal scorer batch है, तो December 15th से start हो रहा है 2023 के लिए. So you can join this batch. Do use my code DASLive and you can get a 10% discount. So regularly batches आते रहते हैं. Okay, let us start. First question. These are all previous XAT questions. Professor Mandal walks to the market and comes back in an auto. It takes him 90 minutes to make the round trip. If he takes an auto both ways, it takes him 30 minutes. Now on a Sunday he decides to walk both ways, so how long would it take him? Very simple question. मान लो वो ऐसा होम से मार्केट जा रहा है, तो if he goes by auto, he walks. जाते टाइम he is walking, and while returning he is returning by an auto. Then it takes him total 90 minutes. That means walking plus auto is equal to 90 minutes. Distance same है, जाना walking में, आना auto में 90 minutes. And instead if he took an auto both ways, that means auto में जा रहा है, auto में आ भी रहा है, round trip, it takes him 30 minutes. That means एक बार auto में एक trip बनाना, one side, is 15 minutes. So if auto is 15 minutes, that means walking will be 75 minutes. The same distance if he walks is 75 minutes, because walking plus auto is 90 minutes. You don't have to take distance and solve. इसमें कुछ नहीं, very basic common sense based question. So अगर walking 75 minutes है and he decides to walk both ways,
Hence, what is the time that he will take? 2 into 75, 150 minutes. ओके, सॉरी ग्रीन कलर यूज कर लिया, ये ज़्यादा विजिबल नहीं होगा आई थिंक. एनीवेज वाइट कलर यूज करेंगे नेक्स्ट. तो वेरी इजी वन. ओके, नथिंग डिफिकल्ट. एंड यहाँ पे कोई टीएसडी का कोई फॉर्मूला एंड ऑल ये सब नहीं यूज हो रहा है. एंड यू डोंट हैव टू सॉल्व और समथिंग. डी लेट्स द डिस्टेंस बी, लेट अस से द डिस्टेंस इज डी, स्पीड इज समथिंग, नथिंग. ओके, टीएसडी इज वन एरिया. ओके, जब भी टीएसडी क्वेश्चन दिखे, always try and visualize. Visualization helps a lot in TSD to understand what the situation is. Question क्या पूछ रहा है? Rather than just starting with variables and all, question क्या पूछ रहा है? क्या calculate कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? Which thing to use? Is it something similar to what I have solved before? You have to think in these these lines to be able to solve a new question. ठीक है? Let's take a look at this one. At the center of a city's municipal park, there is a large circular pool. तो ये एक circular pool है, ठीक है. Now in this circular pool, a fish is released. The fish swims north 300 feet before it hits the edge of the pool. Then it turns east. तो पहले ऐसा वो north जा रहा है 300 feet. फिर यहाँ से east जा रहा है another 400 feet. तो ये तो 90 degrees हो गया. Suppose this point is A, this point is B, this point is C. Now when I'm joining AC, can I say AC will be diameter? Angle ABC is equal to 90 degrees. क्योंकि north and east में तो perpendicular directions है. So this implies AC is equal to the diameter. Why? Because angle made at the semicircle is the 90 degree. Angle made by the diameter is equal to 90 degrees. Angle made by the chord at the alternate segment is equal. And when the chord becomes diameter, the angle becomes 90 degree. So, and AC का value कितना आएगा? It is 300 square plus 400 square का square root. So AC is like 500 feet. Now once you know that, what is the area of the pool? तो पूल रेडियस कितना आ जाएगा? अगर AC आ रहा है 500, पूल रेडियस इज लाइक 250 फीट. वंस यू नो द रेडियस, अब तो एरिया बहुत इजी है. इतना सिंपल क्वेश्चन देखो, 5 into 250 का होल स्क्वायर, 62,500 पाई. दैट इज आंसर. I hope this makes sense, all of you. Not a difficult one, easy question, nothing difficult about this. Just you have to read the question carefully and then solve. Previous question, ये question solve करने का ये एक फायदा है, like it gives you an idea. Okay, not every time the questions are difficult, and ऐसा नहीं कि I have picked these easy questions from various years. ये एक ही साल के ही questions हैं. Okay, this question you might have solved while preparing for the CAT exam also. Mr. Mehra is planning for higher education expenses of his 2 sons. तो 2 सन है, एक का एज 15 है, दूसरे का 21 है. दोनों में वो प्रिंसिपल 15 lakhs को बाई 2 कर रहे हैं. तो दोनों का 7.5 lakhs, 7.5 lakhs, and each of them is going to get an amount of 21 lakhs, 21 lakhs. तो दोनों में इंटरेस्ट कितना आ गया? 13.5 lakhs. Each of them is getting an interest of 13.5 lakhs. But the only thing different here is time. When they reach the age of 21, तो सन 1 के पास है 6 years and सन 2 के पास है 9 years. बट दोनों का सिंपल इंटरेस्ट ऑप्टेंड इज सेम. तो PRT by 100 दोनों के केस में कर लो. So I get 7.5. Let us say the rate of interest here is R1 and here it is R2. R1
PRT by 100 is equal to 7.5 into R2 into T यहाँ पे है 9 by 100, तो ये तो कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो यू गेट बेसिकली R1 डिवाइडेड बाय R2 इज 9 by 6 और 3:2, ठीक है। एंड देन किसी एक को सॉल्व कर लो, मान लो मैं पहला ये पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7.5 into R1 into 6 by 100, and we already know what the simple interest is, 13.5. बस अभी इसे सॉल्व कर देना है, this 5 and this is 9, P2, P3, so I get R1 is equal to 30%. Once you know R1, then R2 भी आ जाएगा, क्योंकि R1 is to R2 is 3:2, we have got this, so this is equal to 20%. Again, very easy. People attending the session do like the session, and please watch the previous XAT 1 and XAT 2 ka practice session. Okay, this is practice session 3. Do watch the previous two. I'll try and cover the previous questions in these XAT practice session series. You can also join me for my special classes, जहाँ पे हम regularly कर रहे हैं practice on XAT, IFT, NMAT, SNAP. सब sections में हम practice कर रहे हैं every day on the Unacademy platform. You'll get my profile link on the description of the channel. Free classes है, no subscription needed. Special classes है, free है. You can join me for the special classes if you are preparing for other management tests. Alright, let us see this. Time and work type का question है. Alvela, Bob and Shulbul have to read a document of 78 pages. Okay, total to be read is 78 pages. And make a presentation next day. They realize that the article is difficult to understand and they would require the teamwork to finish the assignment. Now, Alvela can read a page in 2 minutes. Bob can read one page in 3 minutes, and Chulbul can read one page in 4 minutes. So मान लो work is same. Can I say Albella, Bob and Chulbul का time ratio is 2:3:4? Can I say this? क्योंकि ये 2 मिनट ले रहा है तो वो 3 मिनट ले रहा है, और वो 4 मिनट ले रहा है, वही एक पेज पढ़ने के लिए. So if this is the time ratio, work efficiency, we know that work efficiency is inversely proportional to time. Someone who is more efficient will take less time, and someone who is less efficient will take more time. And because work efficiency is inversely proportional to time, so work efficiency ratio is 1/2 is to 1/3 is to 1/4. Inverse हो गया. 1/2 is to 1/3 is to 1/4, ये correct ratio है, but we don't usually conventionally write ratios in this form. ठीक है, तो इसको integer form में कैसे लाएंगे? You multiply the LCM throughout. 2, 3 and 4 का LCM 12 है, तो multiply 12 in all these cases, तो 6:4:3. That means उनका work efficiency is in the ratio 6:4:3. That means अगर अलबेला 6 parts कर रहा है, बॉब 4 parts and चुलबुल 3 parts, उतना काम करेंगे, and जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा. And बोल रहा है कि number of pages that Bob should read. तो Bob अगर टोटल में देखो 6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3, टोटल 13 पार्ट्स में से बॉब कितना कर रहा है? बॉब इज डूइंग 4 पार्ट्स. तो बॉब ने कितने पेजेस पढ़े? 4/13 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस. आई कैन से 24 पेजेस बॉब इज रीडिंग. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 24 पेजेस बॉब वुड बी रीडिंग, क्योंकि उनका वर्क एफिशिएंसी ऐसे डिवाइड हो गया. तो जब अलबेला 6 पेजेस पढ़ रहा होगा, बॉब 4 पेजेस, चुलबुल 3 पेजेस, 6:4:3. तो बॉब टोटल नंबर ऑफ पेजेस से कितना पेज पढ़ रहा है? तो 4/13 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस, 24. Such a simple question, isn't it? And all these are from the same year. Okay, note this. These are from the same year. ऐसे नहीं कि I have picked easy questions. If your concepts are clear, that is an exam which will make you think. ठीक है, थोड़ा deep thinking चाहिए.
ऐसा नहीं कि जैट का एग्जाम डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, एंड ये दीज ऑल हाइप जब बनता है, डोंट लिसन टू एनी ऑफ इट। ओके, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, डिफिकल्ट हो इजी हो उससे तुम्हारा कुछ लेना देना है ही नहीं। इजी है तो सबके लिए इजी है, अगेन द एग्जाम बिकम्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो नेवर एवर बॉदर अबाउट एग्जाम डिफिकल्ट है इजी है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू आई नीड टू सॉल्व टू क्रैक दिस, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू आई नीड टू सॉल्व। तो हाउ डू आई पिक दोज क्वेश्चन, विच आर माई स्ट्रेंथ एरियाज, कहाँ से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, फ्रॉम वेयर कैन आई पिक इजी क्वेश्चन, और हाउ डू आई बैलेंस माई स्कोर अक्रॉस द सेक्शन। ऑलवेज थिंक अबाउट द स्टफ दैट विल हेल्प यू गेट अ परसेंटाइल, and don't worry about difficult आ रहा है easy आ रहा है। A lot of people waste time on doing that. They keep asking in different platforms, जैट में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, those things nobody can exactly ever say क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। I don't need to like worry about those things. Only focus on what matters. Matters is कितने स्कोर तुम ला पाओगे, कैसे स्कोर लाओगे, क्वांट्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं। सपोज क्यूए सेक्शन में आई एम टारगेटिंग 12-13 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन में डीआई एक सेट हो गया, तो क्वांट्स के 7-8 क्वेश्चन ये भी करने हैं। हाउ डू आई पिक दो 7-8 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग में हाउ डू आई बूस्ट माई स्कोर, वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चन मेरे फेवर में हो रहे हैं, विच क्वेश्चन आई एम रिपीटेडली मेकिंग मिस्टेक्स। तो यू हैव टू एनालाइज एंड देन थिंक व्हाट वर्क्स फॉर यू, रादर देन गेटिंग इंडल्ज यहाँ से इजी। देखो इस बार मान लो एक चैप्टर से डिफिकल्ट आया, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी इजी क्वेश्चन। चैप्टर तो चैप्टर होता है, चैप्टर में डिफिकल्ट इजी तो कुछ होता नहीं। एंड जो चैप्टर से इस साल इजी क्वेश्चन आया, हो सकता है दे विल गिव अ लेंथी क्वेश्चन द नेक्स्ट ईयर। एनीथिंग कैन हैपन, इवन इफ आई से यू दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, but can you guarantee that anything from that chapter you can solve? So that journey or that thinking process is useless totally. क्या, कभी वैसा सोचना मत, एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड अगर कभी सॉल्व करते टाइम तुम्हारा एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। दैट डजंट मीन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द चैप्टर। ट्राई एंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। नहीं हो रहा है, देखते हैं सोल्यूशन, या लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, सो मे बी विल लर्न समथिंग न्यू, एंड दैट विल गिव यू like a new method or new approach to solve another question. When you see a new question, you will be able to at least think in one extra way now. So always have that bent of mind. Okay, let us take a look at this set theory. 70% of the students who joined XLRI last year play football. So I'll take let total number of people to be 100x. So how many people are playing football? 70%. So 70x. So how many people are not playing football? 30x. 75% play cricket. How many people are playing cricket? 75x. So how many people are not playing cricket? 25x. 80% play basketball. So how many are not playing basketball? 20x. And 85% play carom. So how many are not playing carom? 15x. तो ये not playing में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? To try and understand why am I calculating the people who not play. Question is saying find the minimum percentage of the students who play all four games. Now if you are someone who is playing all four games, you cannot come on this group, क्योंकि कोई अगर एक भी गेम नहीं खेल रहा है, दैट मीन्स वो सारे गेम नहीं खेल रहा, इज इट? अगर मान लो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, हाउ कैन आई से आई एम नॉट लाइक आई एम प्लेइंग ऑल फोर गेम्स? कैन आई से दैट? Maybe I'm playing 3 games or maybe 2 games, but I can definitely say that I'm not playing 4 games because I'm not playing one game at least. Okay, so this is the group that doesn't play at least like एक गेम तो नहीं खेल रहा है. Now you can think that okay ठीक है, 30x people are not playing football, but maybe out of this some people are also not playing cricket. वो भी तो हो सकता है. ऐसे नहीं कि ये 30 अलग है, ये 25 अलग है. There might be people who are not playing football as well as cricket, and इन दोनों में कुछ कॉमन है. वैसे हो सकता है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल में भी कुछ कॉमन है. तो बहुत से केसेस आएंगे, तो इंडिविजुअली सॉल्व करने के लिए उतना डेटा तो है नहीं. बट लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम परसेंटेज हु प्ले ऑल फोर गेम्स. तो ऑल फोर गेम्स जो खेल रहे हैं, अगर तुम्हें उसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम कर लो. पीपल हु डोंट प्ले ऑल फोर गेम्स, इफ दैट इज मैक्सिमम, ऑटोमेटिकली जो रह गया वो मिनिमम हो जाएगा. तो ये मैक्सिमम मतलब तुम ऐसे सोच लो इनका कोई नो इंटरसेक्शन.
तो ये कितने परसेंट हो गए थे? 90x, तो टोटल 100x minus 90x. 10x is the minimum number of people who don't play all four games. Hence the answer is 10%. There is another method of solving this using line diagram, but this is a shortcut. मतलब definitely you can say 30x people are not playing football. उतना तो तय है. 30x people are not playing football. They will not be part of the group who play all four games. क्योंकि ऑलरेडी वो एक गेम नहीं खेल रहे. तो ऐसा करके सारे एक्सक्लूड कर लोगे तो मिनिमम इज 10x. Okay, very easy one. Okay, let's take a look at this one. People attending live do like the session and subscribe to the channel so that it reaches more number of people. Every day you'll get lots of video content on this channel. Do subscribe, will definitely find the channel very useful. Mean of 6 positive integers, so n is equal to 6. Unka mean is 15. That means sum is equal to 90. And unka median is 18. Median ka matlab, median is the middle most observation. Median is the middle most observation. And the only mode, एक ही mode है, only mode is less than 18. Maximum possible value of the largest of the 6 integers. So 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो तुम्हारा मीडियन यहाँ पे आएगा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है. अब सोचो, अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 6 इंटीजर्स. मान लो ये लार्जेस्ट है, तो फिर बाकी सबको मिनिमम करना है. बट क्योंकि दिस इज 18, आई कैन से दीज 3 वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड दीज 3 वैल्यूज विल बी लेस देन इक्वल टू 18. एंड जो मोड है वो 18 से कम है, तो मोड में भी यहाँ पे ले सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग 1 and 1, लेट अस से 1 इज द मोड. फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों में मुझे कम देने हैं, बट इन दोनों का एवरेज शुड बी 18. तो आई कैन नॉट गिव 18 and 18. यहाँ पे 18 दे सकते हो, बट इन दैट केस 18 बिकम्स द सेकेंड मोड अगेन, क्योंकि 1 दो बार आ गया, फिर 18 भी दो बार आ जाता है. तो 18 ना देके व्हाट आई डू इज, कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि ये 1 दिए, मुझे मिनिमम करना है तो इसको 2 देंगे. द प्रॉब्लम इज इफ यू आर गिविंग दिस एज 2, दिस बिकम्स 34. यू आर नॉट हेल्पिंग. तो इसको 2 करके फिर इसको बहुत बढ़ा दिए. एनीवेज इनका सम तो फिक्स हो ही रहा है, बट इसको 34 कर दिए, फिर इसको 35 मिनिमम लेना पड़ेगा. तो रादर देन डूइंग दैट, जो इतना बड़ा गैप है यहाँ पे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. So what you can do is you can take this as 17 and this as 19. तो क्या हुआ, बाकी दोनों के लिए थोड़ा रूम बचा यहाँ पे. 17, 19 and you take this as 20. And whatever left can come here now. समझ रहे हो? तो कितना हुआ यहाँ पे, 36, then 56, then 58, तो 32. इससे ऊपर और तुम जा ही नहीं सकते. You try in any way you want, you cannot go beyond 32. Hence answer is 32. Simple understanding of mean, median, mode and how they work. Okay, just don't limit your understanding of what is mean, what is median, what is mode, how do they work, उनका significance क्या है, थोड़ा वो सब deep और एक step, just go one step ahead and try and understand it. ठीक है. All right, hope this is clear. Not very difficult question, and all these are questions from the same year. I don't remember the exact year, but all these are previous exact questions. Let's take a look at this one. यहाँ पे देखो, we'll use just a simple rule that any real number plus its reciprocal is greater than equal to 2 if a is a positive real number. Any positive real number plus its reciprocal is greater than equal to 2. बस वही चीज करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में इफ आई एम टेकिंग a कॉमन,
I get A plus 1 plus 1 by A. Similarly, B common लिया तो B plus 1 plus 1 by B. Then C plus 1 plus 1 by C. Then D plus 1 plus 1 by D. And then E plus 1 plus 1 by E. Divided by A, B, C, D, E. तो ये A, B, C, D कैंसिल हो जाता है. I'm only left with A plus 1 by A plus 1. B plus 1 by B plus 1. And so on till E plus 1 by E plus 1. Now because our objective is to find the minimum value, तो every expression को minimum करना है. A plus 1 by A का minimum value कितना है 2. B plus 1 by A का 2. E plus 1 by A का 2. क्योंकि वो जो लास्ट में प्लस 1 है उसको तो चेंज नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स एवरी ब्रैकेट का वैल्यू हो जाता है 3. तो 3 being multiplied 5 times. Our answer is 240. इससे इजी क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते अगर तुम्हें पता है रूल्स कैसे सॉल्व करने हैं. मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर्स में देयर आर सम 5-6 रूल्स. अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन एंड a plus 1 by a greater than equal to 2. इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस लॉजिक से. एंड दैट स्पेसिफिकली हैज आस्क्ड 3-4 क्वेश्चंस जो मेरे को तो अभी भी याद है. 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ से आए हुए हैं और भी आए हुआ होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट रूल. Yeah, so do not skip any chapter when you are reading. Do not skip any chapter. या do not prioritize in your head that ये chapter important है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा. अभी गया तो क्या कर सकते हैं? कैन वी गारंटी जो भी आएगा कर सकते हैं? So be ready for all chapters. I am saying that. I am not asking you to be experts in all chapters, but being ready in all chapters is a much more better way to crack the exam. तुम्हारा अपना strength area of course होगा because you have given CAT. I'm not saying again read fresh and this can be like a debate कि एक chapters में ज़्यादा अच्छा होना better है rather than knowing all but not being able to solve any question. But it's not about that. Exam crack होता है on the basis of selection of questions. And selection of questions is only effective if you are looking at all questions. If you're not looking at all questions, then how come I can say that my selection is better? Select ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम ही गलत दे रहा हूँ, तो how can I score better? ठीक है. So hope these questions give you an idea how to approach these kind of questions in the exam. We'll continue with more sessions on that QA practice on this channel. If you have missed the previous sessions, do watch previous session number 1 and 2. And also join me on the Unacademy platform for my special classes. All classes are free. Previous is that questions, QA का हो गया, decision making हो गया, then SNAP का AR and LR questions and quants questions, IIFT का QA questions, DI questions, all these are taking on the special classes category. So you can get the link on the description of the video. So do join me for my special classes. गोल स्कोरर बैच के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन अ बैच 2023 पीपल, डू जॉइन दिस बैच. ओके, पार्टिसिपेट ऑन द यूसीएफटी एंड डू जॉइन द बैच. ये एक रीसेंट बैच स्टार्ट हुआ था आईएफटी कैट जैट एंड सीमैट के लिए. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट on your subscription. So that is it from my end for this session. Thank you all for joining. Hope you guys got some insights from this session, and you will keep practicing such questions more and more because practice is the key. Okay, the more you practice, the better it is. So keep studying, keep practicing. We'll meet again in the next session. Till then, have a nice day, everyone. Thank you. Bye bye.